माय नेम मोहम्मद आसिफ। आज हम लोग सीखेंगे पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ ATMEGA16 microcontroller. This microcontroller has 40 pin IC and this has 4 ports: port A, port B, port C and port D. Out of 40 pin, 32 are used for input-output port. Pin number 1 to pin number 8 is used for port B as well as alternative function of like XCK, external UART clock, timer 0, timer 1, external interrupt to AIN0 analog comparator positive, AIN1 analog comparator negative, OC0 output compare. Pin number 5, 6, 7, 8 is used for port B as well as ISP in system programmer and as well as SPI channel. Serial peripheral interface, this is used for communication. ये क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. And this pin is also used for system programmer, means कोई भी कोड हम लिखते हैं उसको माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करने के लिए ये प्रोग्रामर पिन है, इसी के थ्रू ये बर्न होता है. पिन नंबर 9 इज यूज फॉर रीसेट, दिस इज एक्टिव लो पिन. पिन नंबर 10 इज यूज फॉर VCC, 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे काम करता है. ग्राउंड. पिन नंबर 12 एंड 13 इज यूज फॉर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, 16 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए. Pin number 14, 15 is used for port D0, port D1 as well as RxD and TxD. UART serial communication. Pin 16 and pin 17 is used for port D2 and port D3 as well as external interrupt 0, external interrupt 1. Pin 18 and pin 19 is used for port D4 and port D5 and PWM channel, OC1B, OC1A, pulse width modulation channel. ये क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. पिन नंबर 20 पोर्ट D6 and ICP1 input capture pin. This pin is used to measure the event of pulse width measurement. Pin 21 is used for port D7 as well as output compare of counter 2. Pin 22, pin 23 is used for two-wire interface, TWI communication. SCL and SDA are the pin. Serial clock line, serial data line. Pin number 24 to pin number 27 is used for GTAG, JTAG, Joint Test Action Group. This pin is used for testing and designing of PCB and debugging purpose. This available in 2, 4 and 5 pin of ATMEGA16 and ATMEGA32 and above. Pin number 28, pin number 29 is used for timer oscillator 1, timer oscillator 2 and port 6, port C of 6, port C of 7. Pin number 30 is used for ADC power supply, AVCC. 31 ग्राउंड. आपने देखा कि दो ग्राउंड है, एक 11 पर एक 31 पे. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर माइक्रो कंट्रोलर को उल्टा लगाया जाए तो माइक्रो कंट्रोलर डैमेज नहीं हो. इधर से 11 नंबर पर आ रहा है, अगर इसको उल्टा लगाया जाए तो इधर से भी 11 पे ग्राउंड आता है, इसीलिए क्रॉस कनेक्शन में होता है. ठीक है. पिन नंबर 32 ए रिफरेंस, ADC के लिए यूज होता है, एनालॉग रेफरेंस. पिन नंबर 33 टू पिन नंबर 40 इज यूज फॉर पोर्ट ए एज वेल एज ADC चैनल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चैनल. जब भी एनालॉग वैल्यू लेकर डिजिटल में शो करना हो
तो इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में LM35, दिस इज अ टेम्परेचर सेंसर, दिस इज आल्सो अ टेम्परेचर ट्रेसर सीरीज। व्हेन वी यूज टेम्परेचर सेंसर वी यूज दिस पिन ADC। तो आज हम लोगों ने सीखा पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ ATMEGA16। आने वाले वीडियो में कुछ और इसके बारे में जानेंगे और डेस्कटॉप पे सोर्स कोड भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।